अस्सलाम वालेकुम पार्टिसिपेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फाइटिंग टेररिज्म। टेररिज्म की जो अभी है, टेररिज्म रिसेंट टेररिज्म जो हो रही है पाकिस्तान में या उसके हवाले से है। बेसिकली ये इट इज़ टेकन फ्रॉम डॉन आर्टिकल। इसमें हम पढ़ेंगे कि टेररिज्म क्या है, टेररिज्म की मेन दो वजह क्या है। एक तो नेशनलिस्ट इंसर्जेंसी है और उसके बाद टीटीपी है, और उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को क्या क्या मैयर्स लेने चाहिए, ये है आज का हमारा टॉपिक। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें फॉर न्यू एक्साइटिंग वीडियोस। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कॉम्प्रिहेंडिंग द नेचर ऑफ टेररिस्ट अटैक थ्रेट इज़ असेंशियल फॉर काउंटरिंग और physically eliminating it, as well as for preventing its reoccurrence. During its decades, a long fight against terrorism, Pakistan has successfully developed a functional response and action system to counter terrorism. As the nature of threats keeps changing, it requires immediate readjustments in a policy, surveillance, and operations. If the countering mechanism is less flexible, there are chances that the terrorists will eventually breach the safety values. जैसे आपको पता है कि वी आर फाइटिंग टेररिज्म सिंस 9/11 वाला जो मसला था उससे, ठीक है ना। तो हमें ये एक्सपीरियंस है कि काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म को कैसे कंट्रोल करना है। सबसे पहले करते हैं। तो पहले तो इंट्रोडक्शन किया, उसके बाद करंट सिचुएशन ऑफ राइजिंग टेररिज्म पाकिस्तान। पहले तो ख़त्म हो गया टेररिज्म, उसके बाद जो अभी जो है ना राइज हो रहा है टेररिज्म, उसकी क्या वजह है वो स्टार्ट करते हैं। डेटा शोज दैट टफ बैटल इज़ गोइंग ऑन बिटवीन द टेररिस्ट एंड काउंटर टेररिज्म फोर्सेस इन पाकिस्तान। इन February alone, the TTP, Tehrik-e-Taliban Pakistan, and the other religiously motivated terrorist groups carried out 19 attacks in country, which claimed 23 lives and wounded people. However, the security forces eliminated 49 militants in counter-terrorism operations, besides arresting 44 suspected militants in 11 search operations during this month. The TTP and similar groups launched 14 attacks in KP, 4 in Balochistan and 1 in Karachi in February. Meanwhile, in the same month, nationalist insurgents groups perpetrated 10 attacks which claimed 12 people's lives and wounded 33 people. जो भी 33 पीपल उसमें चले गए। उसके बाद 2 मेजर प्लेयर्स बिहाइंड टेररिज्म इन पाकिस्तान। दो कौन से मेजर प्लेयर्स हैं पाकिस्तान में टेररिज्म फैलाने के लिए? एक तो है नंबर 1 नेशनलिस्ट इंसर्जेंट्स हैं। रिलीजियसली मोटिवेटेड मिलिटेंट्स एंड नेशनलिस्ट इंसर्जेंट्स डू नॉट हैव recruitment in a short supply and have enough logistical and financial support to sustain their operations. Hence, these insurgents are a big threat to peace and prosperity of Pakistan. Number 2 पे है Tehrik-e-Taliban Pakistan TTP. The TTP uses Afghan soil and has the full backing of the Taliban regime. But Taliban regime repeatedly denies that this claim, but reports indicates otherwise. A recently released US State Department report has warned that TTP aims to push the Pakistani government out of KP and establish the Sharia by waging a terrorist campaign against the military and the state. According to the report, the TTP uses the tribal belt along the Pakistan-Afghan border to train and deploy its operatives. Moreover, the group draws ideological guidance from Al-Qaeda, while elements of the latter rely partly on the TTP for a safe haven in the Pashtun areas along with the Pakistan-Afghan border. The report has categorically mentioned that this arrangement has given TTP access to both Al-Qaeda's global network and its members' operational expertise.
The report identifies that the Islamic State of Khorasan is another group that poses a significant threat to Pakistan and is composed primarily of former TTP members, the Afghan Taliban, and the Islamic movements of Uzbekistan. The TTP is gradually increasing its footprint in other parts of the country too. It has become quite active in Balochistan. Similarly, a group of 3 TTP militants equipped with explosive and weapons stormed in a Karachi police office last month. The probability is high that the TTP will continue to attempt similar attacks in Pakistan, which would require intelligence agencies and security forces to be extra vigilant. उसके बाद है व्हाट इज़ नीड टू बी डन टू काउंटर टेररिज्म. ठीक है ना, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए. द इनहांस कैपेसिटी ऑफ सिटी डी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स को इन्हांस करा है, उनकी कैपेसिटी को इन्हांस करा. Terrorist generates financial resources through criminal activities like cyber fraud. Hence, combating terror financing requires a significant approach, technical skills, and effective coordinations among the law enforcement agencies. Improving scientific skills instead of improving muscular posture. The CTDs are following practices of normal policing, and they focuses more on improving the muscular posture of the agency rather than converting it into a smart force. CTDs must improve the investigation techniques and analysis skills to understand the whole phenomenon of terrorism. A positive role of NECTA. NECTA is a federal body which provides training to improve capacity of CTDs. NECTA has to focus more on developing early warning systems, data processing, and coordinations. I hope आपको समझ आया होगा.